Hello students, hope you all are doing good. So here I Gargi Pawar, Assistant Professor BBA in Saint Andrews Institute of Technology and Management Program. So here I'm back with an online lecture series on HRM subject. So let's start with lecture. See guys, in our last lecture we discussed about the HR outsourcing and we also discussed the KPU at the same time. Now, in today's lecture, we are going to discuss BPO, that is business process outsourcing. Okay, so let's start with lecture. Let me show you the slide. Just wait for a second. Yes. So, in today's lecture, we are going to start BPO. As we have started KPO and we have discussed KPO in last lecture, and according to the definition of KPO, KPO is always for the core activities of the company, core functions के लिए जो आप outsourcing करेंगे, that is called KPO. And KPO के लिए you need knowledge and expertise at the same time. Okay. Now, in today's lecture, we will discuss the business process outsourcing, that is BPO. So, what is BPO? Let's see. Business process outsourcing, popularly known as BPO, is the business strategy where one company hires another company to perform certain tasks for them. That is, the outsource a certain job. When a company appoints another company to perform his some task or the certain task, then that process will be known as business process outsourcing. So now what is the difference between KPO and BPO? We do the same in KPO also. Then what is the difference between BPO and KPO? The difference between KPO and BPO is that in KPO we outsource our core activities and in BPO we will outsource our non-core activities. So let's see, one point to know that only non-core activities are usually outsourced under BPO. Okay. The companies do not part with their core competencies. They maintain all their focuses on on these like manufacturing and marketing, etc. So core activities like manufacturing and marketing, these are not outsourced under BPO. Okay, in BPO, uh, in BPO, these companies, the BPO companies, do not part with the core competencies like manufacturing and marketing, and they do non-core services on they provided they outsource the company outsource to BPO only non-core services. ये so BPO KPO में डिफरेंस क्या दोनों ही है, आप अपनी एक्टिविटीज को आउटसोर्स करते हो किसी और कंपनी को परफॉर्म करने के लिए देते हो, लेकिन BPO में आप नॉन कोर एक्टिविटीज को करवाते हो किसी आउटसाइड कंपनी से, एंड KPO में आप कोर एक्टिविटीज करवाते हो किसी और कंपनी से. However, non-core services like after-sales services, customer relationships, supply chain management, real-time accounting, etc., can be outsourced to BPO. So there are some kind of BPO services like after-sales services, customer relations, supply chain management, real-time accounting, etc. You can outsource under the BPO. Yes. Now, let me show you one thing that which kind of activity you can outsource. Just wait for a second. Yes. See, there is little more about the business process here. So, business process outsourcing is the method of subcontracting various business-related operations to third-party vendors. So, if you are outsource your business-related operation to third parties, then that is called BPO. Many companies, from small startup to large companies, opt to outsource processes as new and innovative services are increasingly available in today's ever-changing, highly competitive business climate. Companies adopt BPO practices in two main areas of back office and front office operations. So BPO जो practices होगी, they can be take place in two main areas. In back office also BPO is adopted, and in front office operations BPO is also adopted.
Now, back office BPO refers to the company contracting its core business operations such as accounting, payment processing, IT services, human resource regulatory compliances, and the quality assurance to the outside professionals who ensures the business runs smoothly. So, back office BPOs को आप क्या काम दे सकते हैं, like accounting work, any payment processing, IT services you can outsource under the back office BPO, human resource regulatory compliances, and all these work you can give to back office BPOs. Okay, and front office BPOs, in front office BPOs, tasks include customer related services such as technical support, sales, and marketing. All these will be included in front office BPOs tasks. Okay, so this is the about the basic. This is basic about the BPO. Now we will discuss the advantage and disadvantage of BPO. So first, let's discuss the advantage of a BPO. What is the advantage of the BPO? First is flexibility. Outsourcing non-core activities to a BPO allows a company to be far more flexible. Firstly, the company does not have to invest in additional fixed assets and can convert them in variable costs. It also increases flexibility in the resources management of the client companies and helps the adapting to change in environments such as faster. So, what is flexibility? So, see, बीपीओ आपको आपकी कंपनीज को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। बीपीओ को आप वर्क देने से अपने वर्क देने से फ्लेक्सिबिलिटी आपके वर्क में आती है। फर्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जांपल है कि आपको कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती। जो भी आप काम बाहर के लोगों को दे रहे हो, लाइक सप्लाई चेन का दे रहे हो या सिर्फ अकाउंटिंग का दे रहे हो या फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंसी भी इंक्लूडेड इन बीपीओ केपीओ सॉरी। तो बीपीओ में लाइक आप अकाउंटिंग का कोई वर्क दे रहे हो या कोई और वर्क दे रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या है, आपको फिक्स एसेट्स परचेज नहीं करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग के लिए आपको सिस्टम चाहिए, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट चाहिए जिसमें कम से कम 3 से 4 सिस्टम होने चाहिए, प्रिंटर्स होने चाहिए। ये कोई भी फिक्स कॉस्ट जो भी आपके एसेट्स में फिक्स कॉस्ट लगती है या और कोई फिक्स कॉस्ट लगती है, फिक्स एसेट्स के ऊपर जो कोई कॉस्ट आती है, तो आपको कोई भी एसेट्स परचेज करनी नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ काम दोगे बाहर वाली किसी कंपनी को और वो कंपनी खुद अपनी एसेट्स यूज करके आपको काम करके देगी। Okay, so you are not required to purchase any fixed assets. So आपकी जो भी additional cost लगने वाली है fixed assets में, उसको आप किसमें convert कर सकते हो? You can convert that cost in variable cost. Okay, that fixed cost you can convert in your variable cost. So जैसे ही आप अपने variable cost में convert करोगे, that means your business will become more flexible. Okay, जब आप अपनी fixed cost को variable में change कर दोगे, that is called flexible. Flexible का मतलब ये क्या है कि हम change होने के साथ साथ हम खुद भी change हो। तो एट द सेम टाइम फिक्स कॉस्ट को आप टाइम टू टाइम चेंज नहीं कर सकते, दैट विल बी फिक्स। और अगर आप वेरिएबल आपकी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट होगी, दैट मींस यू कैन चेंज योर वेरिएबल कॉस्ट विद द era of time or with the time to time you can change your cost. Okay, so first advantage of BPO is flexibility. Then second is cost effective. Outsourcing some of business processes and activities can be very cost effective for the client company. They save on investing on fixed assets and fixed costs, and they can redirect these funds to their core activities. So सेम हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस हम केपीओ में भी देख सकते हैं और बीपीओ में भी सेम एक एडवांटेज है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस कॉस्ट आपको कहीं ना कहीं कम लगता है, क्योंकि आपको फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपकी कोई फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी, आपको कोई एसेट्स परचेज नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो आपकी कहीं ना कहीं फिक्स कॉस्ट में कमी आएगी। फिक्स एसेट्स में जो आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर ये सब काम आप खुद करते हैं तो आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ करवाना पड़ता है, कुछ सेपरेट डिपार्टमेंट बनवाना पड़ता है, कुछ मशीन्स रखनी पड़ती है, कुछ इक्विपमेंट्स रखने पड़ते। और अगर आप ये काम आपने किसी और कंपनी को दे दिया, तो दैट कंपनी विल परफॉर्म दैट दीज टास्क एंड will ensure that they have proper machines or the fixed assets that required. Okay, तो अब ये उनका काम है fixed assets purchase करने का, बट कॉस्ट इस वजह से आपकी फिक्स कॉस्ट होती है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाती है और आपकी कॉस्ट हो जाती है। Also, outsourcing to developing countries proves to be very cost saving for those companies. For example, if any large MNC was outsourced their IT services to India, they would save an average 30% of the company's expenses. This is quite significant difference. So, through the outsourcing, you can save your cost and you can make your business cost effective. Then next is speed. One of the biggest advantages of BPO is that they increase the speed of the business processes outsourced to them.
They have a very good response time and the client can focus on the core activities. These fragmentations of activities speed up the whole process is very important in case of like customer services. So see what is happening. स्पीड कैसे मिलती है आपको, जैसे आपने कोई कस्टमर सर्विसेज के लिए कोई आउटसोर्सिंग कंपनी रखी है नाउ, उनका काम क्या है, उस आउटसोर्सिंग वाली कंपनी का काम क्या है कि बीपीओ सपोज, उस बीपीओ का काम क्या है, सिर्फ कंसल्टेशन करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, कस्टमर को कंसल्टेशन करना, ओके, कस्टमर के साथ कंसल्टेशन करना, कस्टमर की प्रॉब्लम सुनना, उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करना। सो उनके पास सिर्फ एक यही काम है, ओके। तो वो जल्दी से जल्दी कस्टमर का रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनके रिस्पॉन्स स्पीड मिलेगी और उसकी वजह से कस्टमर में आप कस्टमर की माइंड में आपकी कंपनी के लिए इमेज बिल्ड होगी और आपकी कंपनी स्पीडली ग्रो करेगी, ओके। तो आपके कामों में कहीं ना कहीं स्पीड आएगी और एट द सेम टाइम जो आपके मैनेजर्स हैं, जो आपके ओनर्स हैं, उनके भी कहीं ना कहीं काम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो उनकी उनकी वर्क में भी कहीं स्पीड आएगी और वो भी अपने ग्रोथ के ऊपर इसका ध्यान अपना टाइम कंपनी की या बिजनेस की ग्रोथ करेगा। The last advantage is skilled manpower. So see, manpower is always the skill in the BPO. So BPO is a अगर एक कोई कंपनी है जो स्पेसिफिक कोई सर्विसेज देने वाली है, तो उसके यहाँ पे जो भी मैनपावर होगा, जो भी एम्प्लॉइज होंगे, दे ऑल विल बी स्किल्ड। वो बीपीओ स्किल्ड एम्प्लॉइज को जो पर्टिकुलर टास्क है उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन वाले लोगों को, एक्सपर्टीज को ही अपने यहाँ अपॉइंट करेगा। So when you outsource one of your business activity to a BPO, you are ensured to exemplary services provided by skilled manpower. So if you outsource your supply chain management, rest assured your supply chain will be handled by skilled supply chain managers who are expert in their field. Same goes for IT services or accounting etc. सो जो भी सर्विस को आप आउटसोर्स करने जा रहे हैं वो आप ये इंश्योर करवाते हैं, बीपीओ आपको ये इंश्योर करवाता है दैट these tasks will be performed by all skilled persons or all skilled or expertise. Next, there are some disadvantages also of BPO. So let's discuss disadvantages of BPO. There can be also certain general demerits of using the BPO for their known core activity. The companies can take steps to eliminate most of these advantages. Let's speak a look. So let's see what are these disadvantages. First is communication problem. There can be communication gap between the client and the vendor company due to the various reasons. So आपने जिस कंपनी को आउटसोर्स किया है अपना काम, there may be any communication gap between that company whom you are giving your work and the owner company. Okay? So कंपनी के ओनर और उस कंपनी के दोनों कंपनियों के बीच में, बीपीओ कंपनी और आपकी कंपनी के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है वेरियस रीजंस की वजह से। सो उस कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आपको एक आएगी। देयर कैन बी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस मैसेज। ऑल्सो बोथ कंपनीज में adhere to different standards of services and these can also create friction between these two. Okay. नाउ अगर आप में कम्युनिकेशन गैप होगा तो कहीं ना कहीं आप मिसअंडरस्टैंड करेंगे मैसेजेस को, कंपनी ने आपको कुछ और मैसेज किया है, आप उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे बिकॉज यू हैव अ लॉट कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स. Now second is different time zones. This is the another logistic problem which with the business process outsourcing, the client and the vendor can operate in two different time zones that are far apart. जैसे हमने अभी बात करी कि एक MNC अगर अपना वर्क किसी इंडियन कंपनी को देती है आउटसोर्स करके, in that case there will be some time zones. Okay, तो टाइम की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी क्योंकि there is different time zone in two countries. The difference in time can create many problems like online meeting, communication, etc. So आपके अगर टाइम का डिफरेंस होगा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। लाइक आप जब भी कोई ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट करवाएंगे तो एक जगह कहीं रात हो रही है, फिर आप दिन में कंडक्ट करवा रहे हो, तो रात में जब जिस कंट्री में रात होगी वहाँ के एम्प्लॉइज आपकी मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर पाएंगे और कम्युनिकेशन गैप आएगा. It is usually the vendor that adjusts their shifts to match the office hours of the क्लाइंट कंपनी. यूजुअली क्या होता है, वेंडर कंपनी अपना टाइम एडजस्ट करती है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट कंपनी. लॉस ऑफ नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज लॉस ऑफ कंट्रोल due to communication error, time differences etc. The client company can at times lose control of the product. They may thus feel that the quality of service has suffered. Thus it is very important to have effective communication and transparency with the products. So अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, if there is any communication gap, in that case you lose your control on that product that you give to that BPO. Okay, so आपने उस BPO को जो भी प्रोजेक्ट दिया है, somewhere you lose your control on that because you
communication gap. You are not aware that what is going to happen, or what is happening. Okay, what is going to happen and what is happening, you are not aware about that. Okay, so for the because of the communication gap, you will lose your control on your yourself. Okay, yes. So this is about some disadvantages and advantages of BPO. Okay, so this is all about your first unit. इसी के साथ हमारा first unit खत्म होता है. Now there is some important question from exam point of view. So let's see what is it. First question that can be asked in your exam, that is, what are the policies adopted in human resource management? Second, describe the nature and scope of human resource management. Third is, what is the mean by HR outsourcing? Explain the merits and demerits. So these are some important questions from exam point of view that can be asked in your exam. Okay, so I think that's all for today. In next lecture we will start second unit of your syllabus. So that's all for today.